Yes, come to first example. A can complete a work in 5 days. B complete the same work in 6 days. If they both work together, how many days will be required to complete the work? बहुत सिंपल है. जब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था, आई एक्सप्लेन्ड यू ऑल दीज पॉइंट्स, तो मैंने आपको बताया था व्हेन वाइल डूइंग दीज क्वेश्चंस यू हैव टू फाइंड द वन डे वर्क. ठीक है ना. ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, तो एज वन डे वर्क क्या हो जाएगा 1/5. ठीक है. सिमिलरली बी इज वन डे वर्क क्या हो जाएगा 1/6. एंड इफ दे बोथ वर्क टुगेदर देन देयर वन डे वर्क विल बी वन डे वर्क ऑफ ए प्लस वन डे वर्क ऑफ बी. टुगेदर है तो प्लस करेंगे ना. सो यू विल गेट ए एंड बीज वन डे वर्क 11/30. इट मीन्स they both will complete the work in 30/11 days. ये भी चीज़ मैंने बताई थी कि अगर ए वन डे वर्क 1/x है तो ए कैन फिनिश द वर्क इन x days. तो सेम थिंग we will use here, that both will complete the work in 30/11 days. Same type of question is next. In first question, two persons were given, A and B, and now here three information about three is given, so you can do it yourself. Now come to question number third. P can complete a work in 12 days by working 8 hours a day. Here no information was given that in a day they were working for how many hours, but here this information is also given that P can complete the work in 12 days by working 8 hours a day. It means P can complete a work in 96 hours. ठीक है ना. टाइम टेकन बाय P to complete the work 96 hours. Similarly, Q can complete a work in 8 days by working 10 hours a day. अब देखो number of hours are given different ना. That's why we have to consider hours also. It therefore time taken by Q to complete the work 8 into 10 80 hours. ठीक. Now P is 1 hour work, because here we are giving time taken to complete the work in hours. That's why we will find 1 hour work. वहाँ पर days में कर रहे थे previous question में, but here we are giving information of completing the work in hours. That's why we will find P is 1 hour work 1/96 and Q's 1 hour work 1/80. Clear? If they both work together है, then you will add and will get their 1 hour work. ये 1 hour work आ गया. Working 8 hours a day, in how many days they will complete. अभी आ गया इनका 1 hour work. P and Q will together complete the work in 480 upon 11 hours. ठीक है. तो नंबर ऑफ डेज में आपको फिर नंबर ऑफ डेज में करना है. अब वन डे में वो कितना वर्क कर रहे हैं 8 hours. तो इतने 8 hours काम वो कितने डेज में कर रहे हैं 1 डे में. तो इतने आवर्स वर्क कितने डेज में करेंगे. ठीक है ना. इफ दे वर्क फॉर 8 hours इन 1 day, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली. तो 1 hour में वो कितना वर्क करेंगे 1/8 डे. ठीक. और अब उन्होंने कितने आवर्स वर्क किया 480 by 11 hours. तो कितना आ जाएगा 1/8 into 480 upon 11. आप स्टेटमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं. सो यू विल गेट दिस. क्लियर. नेक्स्ट. Two painters P and Q can paint a bungalow in 3 days. If P alone can paint the bungalow in 12 days, in how many days Q alone can complete the same paint work? बहुत easy है. P और Q इकट्ठे 3 days में कर सकते हैं, और P अकेला 12 days में, तो Q अकेला कितने days में. तो P और Q का पहले दोनों का इकट्ठा 1 day वर्क 1/3 हो जाएगा.
इसी तरह से P's वन डे वर्क 1/12 हो जाएगा. Therefore Q's वन डे वर्क इक्वल टू P and Q वन डे वर्क माइनस P's वन डे वर्क. ठीक है ना. You will get Q's one day work 1/4. It means Q alone can complete the same work in 4 days. बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं. A can lay a railway track between two stations in 16 days. B can lay the same job, can do the same job in 12 days with the help of C, A and B. With the help of C, A and B did the job in 4 days only. In how many days C alone can do the job? But we have given that A can lay a track in 16 days. So A is one day work 1/16. Then B alone can do the same job in 12 days. So B is one day work 1/12. A, B, C with the help of C है ना A and B. So means A, B and C all three can do the same job in 4 days only. So there all threes one day work 1/4. So you want to find C alone work. So if you subtract the work of A and B from this, you will get C's one day work, and then you can declare in how many days C can complete the work. Same type of question is next. Here we have given that A and B can do a work in 40 days, B and C 120 days, and then B alone can do the work in 180 days. In how many days will A and C can do it together? अब आपको क्या दिया हुआ A और B का 40 डेज में, तो A और B का वन डे का वर्क क्या हो जाएगा 1/40. इसी तरह से B और C का वन डे का वर्क 1/120. B का अकेले का काम मीन्स B's वन डे वर्क 1/180. ठीक है. फर्स्टली वी विल simplify the information which we have given in the question. After that we will think on the basis of this information we can find A's one day work. If you subtract these two, you can get A's one day work. Similarly, on subtracting these two, you can get C's one day work. Now we have to find that in how many days will A and C can do it together. A और C इकट्ठे. अगर आपके पास A और C दोनों का वन डे का वर्क आ गया, then you can find A and C's one day work if they work together by adding A's one day work and C's one day work. ठीक है. So same you can see here, it means A and C can do work together in 45 days. Example number 7 is also same, and on the basis of this you will try to do first 10 questions of the exercise. ठीक है बेटा. ओके.